जय जिनेन्द्र। जैन टॉक्स के आज के सेशन में ज्वाइन हुए सभी दर्शकों का मैं स्मिता हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब जब नया साल आता है तो हम कहीं ना कहीं अपने मेंटल और फिजिकल वेलबींग को बढ़िया बनाने का रेजोल्यूशन लेते हैं। अगर रेजोल्यूशन ना भी ले तो एटलीस्ट इनको सुधारने की बातें तो कर ही लेते हैं। टू लिव अ फुलर लाइफ, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस इज अ नेसेसिटी। इस बात को ध्यान रखते हुए Jain Talks is devoting this entire month to discuss mental, physical and spiritual aspects of health with our respected guest speakers who are going to join. श्रृंखला की आज की पहली कड़ी में हम जैन डाइट मतलब के जैन समाज के खान पान के प्रिंसिपल्स और मेथड्स के बारे में साइंस क्या कहता है इसका विश्लेषण करेंगे। And I feel honored to welcome our first speaker of this month, Dr. Pratap Sanchetee ji, who has joined us from Jodhpur. Sir, thank you so very much for coming to our Jain Talks. It's a privilege to have you, sir. So before I hand over the stage to you, sir, I would like to give a brief introduction about you to our audience. Dr. Sanchetee, you have served India's armed forces as a physician and a neurologist for 24 years and retired as Lieutenant Colonel in 1998. You are a visiting professor, PhD supervisor, and advisor at Jain Vishwabharati University and Bhagwan Mahavir International Research Center, Ladnu. You're also serving as the Director of Research at the Spiritual Training Research Foundation, Mumbai. What interests you is mind, because it's an interface between soul and body, meditation and its impact on the brain, and of course, the delivery of neurology care in our society. You're also an editor, publisher, and international reviewer of various journals. At present, you are extending your knowledge as an executive editor of Medical Journal Armed Forces India and the Journal of Indian Academy of Geriatrics, a field of medical treatment of the elderly. So thank you so very much for gracing us, and now I cordially invite you to start the session. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जैन फाउंडेशन का, इसके प्रेसिडेंट मिस्टर रमेश जी शाह एंड आज की कोऑर्डिनेटर स्मिता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं ओपनिंग बैट्समैन की तरह आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बैटिंग आपको पसंद आएगी। आज हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डाइट, जैसे कि हमें सभी मालूम है कि सभी all lives across the globe, they are governed or they require three definite principles: आहार या food, reproduction to carry on the species, and सुरक्षा। ये एसेंशियल्स हैं ऑल लाइफ के। इनमें आहार एक ऐसा है जिसके ऊपर की व्यक्ति का या जीव का कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। सुरक्षा में हम बाहरी जो है परिस्थिति है उनसे गवर्न होते हैं, और रिप्रोडक्शन एक नेचुरल स्टेट है। तो आहार की एक बहुत जरूरी है, और इश्यू ऑफ हेल्दी ईटिंग इज ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस बोथ इन द इंडिविजुअल माइंड एंड इन द सोसाइटी माइंड। अगर हम देखें तो सभी रिलीजन्स and philosophies across the world, dietary restrictions have been imposed. And they are not imposed, they are principles. And in that way, Jain dietary principles, I feel, are one of the topmost in the series. I'll be discussing the scientific aspect. And why so? क्योंकि सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब समाज और व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें फैक्ट्स और फिगर्स की कमी है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो बहुत जरूरी है
किसी भी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली आज के समाज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे कि हम कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, एंड दिस इज in this English quotation, the mind is what the body consumes. Next slide. क्योंकि बात आज डाइट की हो रही है, मैं आपको एक मेनू दे रहा हूं। ये 4 कोर्स मेनू है, जिसमें पहले मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करूंगा, डाइटरी हैबिट्स अक्रॉस द, देन few historical events, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में बात करूंगा। सेकंड में कुछ प्रिंसिपल्स जो स्पेसिफिक जैनिज्म में है, एग्जांपल्स सर्केडियन रिदम, विल बी टॉकिंग लिटिल डिटेल, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस, गट हेल्थ, हमारी स्टमक एंड द इंटेस्टाइन की हेल्थ, एंड ड्रिंकिंग वाटर। द थर्ड आई विल बी टॉकिंग लिटिल डिटेल अबाउट द फास्टिंग। और बिफोर मैं आपको हैंड ओवर करूं फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, आई विल बी कंक्लूडिंग गिविंग यू ए होलसम प्लान। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम देखें healthy lifestyle principles, eating smart is one of the topmost, along with exercising, socializing, positive attitude, brain activity, stress management, financial management, and there are so many things. But they are not sufficient itself, or the single most will be the eating smart. अगर हम ये देखें तो ये प्रिंसिपल्स जो हमें थ्योरेटिकल में मिलते हैं, इवन साइंस भी हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस को डिस्कवर कर रहा है। 4 हार्मोन्स को मैंने यहाँ पर दिया गया है, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, डोपामिन एंड एंडोर्फिन। अगर हम देखें तो इंडिविजुअली ये सब हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, दे आर कॉजिंग गुड थिंग्स लाइक ऑक्सीटोसिन कॉजेज लव एंड अफेक्शंस एंड सो एवरी, but excess of every hormone is bad. So it's a combination of the hormones which is much more important. Example, अगर डोपामिन बहुत ज्यादा होगा, small amount or moderate amount में it causes praise, appreciations, but in big amount or large amount ये gambling और other जो pleasure activities है उनमें जाता है। Next slide. ये कार्टून आपको दिखाता है कि when we are asking the next meal, don't think about feeding stomach. Think about eating the mind, eating for the mind. That is much more important. हमारी फिजिकल और डाइट के बारे में काफी रिसर्च हो चुकी है, पर against the mental health, the research is still in the evolving phase. Next slide. Coming to the topic proper, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आहार मनुष्य के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। It has got a vital role in modulating body, mind and thoughts. एक अच्छी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट बहुत जरूरी है अगर हमें बॉडी, माइंड और थॉट्स को प्रॉपर ढंग से वर्क करना है। We will be talking in detail. Jain codes are based basically on the non-violence, but whether they are looking into other aspects, nourishment, ecological, ethical, cultural, lifestyle, and eating practices, whether they are also handled, but I believe yes. And let us see in the next few slides that Jain diet is not only looks in the non-violence, in many, many other aspects. Next slide. Next slide. Introducing you, vegetarian means no animal products. A vegetarian diet can be another of the 2 or 3 varieties. Vegan, जो animal products भी नहीं लेते, और dairy products and eggs also भी नहीं लेते. They are stricter or stronger than the vegetarians. Lacto-vegetarian, जो कि हम में से ज्यादातर लोग यही हैं, जो वेगन
plus dairy products, milk, curd, ghee, and other things. And another class, which often is told as vegetarian, though truly they are not, all lacto-vegetarian. Means ये जो lacto-vegetarians अगर egg लें तो उनको all lacto-vegetarian कहा गया है. So the Jain diet recommends you to be lacto-vegetarian. Another, we talk about non-vegetarians who eat meat or the fish liberally. Pescatarian, who mainly fish eaters. Example you see in the Bengal or you see in the Kerala. They are basically fish eater and occasionally they take meat. But majority in India, even those who are non-veg, they are flexitarians. Next slide. ये डाइट हेल्थ के ऊपर कैसे असर करती है इस स्लाइड में हमने दिखाया है. एक फेमस स्टडी जो पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट 2013. एनर्जी डेंस means full of the energy and the fat, all fat type, whether saturated fat or the trans fat, they are quite rich in this diet, and this is highest in the non-vegetarian, and energy dense is lowest in vegetarian. When such diet is taken, there is an increased rate of vascular disease, we'll be talking later. Then vegetarian diet in proper, it is basically plant-based. मतलब ये वनस्पति के बेसिस पर है और इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं और इस फाइबर की वजह से काफी क्रोनिक डिजीज कम होती है जैसे कि हमने ऊपर बताया. ये डेफिनेट है कि मैनी विटामिन्स आर देयर इन द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, बट वेजिटेरियन डाइट इज लेस इन द विटामिन B12 and D, calcium, other minerals like zinc, iron, omega-3 fatty acids, and so many things. Overall, on the health, if you look into body weight and obesity, that is understood by every one of us. Vegan has got the lower BMI, less than the 24. Whereas non-veg and those people who take dairy products, the BMI is higher. So even as a health products, dairy is also not a choice. Next slide. Next slide. तो इसीलिए ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पुट अप किए हैं. Do we need change in diet? And are animals better than selection of the dietary products than human being? अगर हम देखें तो पिछले 50 सालों में हमारी डाइट ने रेडिकल चेंज किया है, रिमार्केबल चेंज, और इसका मेन रीजन है इनडिस्क्रिमिनेट एंड ओवर ईटिंग. एंड बेसिकली वी आर बिकमिंग स्वाद के गुलाम, slave of the taste. And because of this, as I told in the last slide, energy dense, there is an increase in the fat, cholesterol, and sugar, and many diseases like hypertension, ischemic heart disease, diabetes, stroke, obesity, they are much more in the current diet. ये डाइट हमारे में क्यों आई है? Hectic schedules. Now we are not free to enjoy the life and enjoy the life. Late night eating is very common. Packed food is common. So also is the Western culture, drinks, and much more important is the peer pressure. Good point against all these odds are that we wish to have better physical and mental health. And the deficiency is that the good scientific studies are not available. तो एक काफी कॉमन सिनेरियो है जिसमें कि हम चाहते भी हैं पर हम कर नहीं पा रहे. नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम देखें डाइट्स को तो दो में डिवाइड किए जा सकते हैं, डाइटरी प्रैक्टिसेस और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस को. रिलीजियस प्रैक्टिसेस and those
हेल्थ रिलेटेड, जो कि अपन मार्केट में जो आजकल इतने लेबल्स आ रहे हैं कि ये डाइट लें, ये डाइट लें, आप इंप्रूव हो जाएंगे. Religious diet, like a Jain diet, Mediterranean diet, Atkins diet, they all are full with the spiritual background. Hardly any in the health related. Compulsion, in religious diet जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें कंपल्सन नहीं होता है, ये वॉलंटरी है. जबकि हेल्थ रिलेटेड डाइट हम मजबूरी में ले रहे हैं. और डिस्कम्फर्ट ऑब्वियसली जब मजबूरी में लेते हैं तो डिस्कम्फर्ट भी रहता है. And one has to prepare a lot for religious practices, whereas no preparation is needed. Today you decide and tomorrow you start. Next slide. Next slide. Coming to our subject proper, what is Jain diet? As I pointed out, ये basically lacto-vegetarian diet. Means vegetarian diet, plant-based diet, plus dairy products. These are the, and it is a specific dietary code based on the ahimsa with the sermon कि violence should be avoided as much as possible. ये सबसे important है कि हम डाइट तो लें. ये एक शाश्वत सत्य है कि किसी भी लाइफ को बगैर कंज्यूम किए हुए हम अपनी लाइफ नहीं बढ़ा सकते. तो जैन धर्म में कहा गया है ईट ओनली वन सेंस लाइफ, एंड उसमें भी प्लांट लाइफ, एंड नॉट द वन सेंस ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नो. एंड अगर उसकी जरूरत हो तो कम से कम लिया जाए. इसी कारण रूट वेजिटेबल्स और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को निषेध किया गया है, और कुछ लोग इसको काफी गहराई से मानते हैं, जबकि कुछ लोग लिबरल हैं, पर दे आर केयरफुल कि रूट वेजिटेबल्स में जितना कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनको साफ करके रखा जाए उतना. अगर हम देखें तो जैन डाइट इज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट डाइट अक्रॉस द ग्लोब. पर अगर हम इनके प्रिंसिपल्स को समझें तो ये नॉट ओनली नेचर फ्रेंडली, इट इज लविंग टू आवर हार्ट आल्सो, इट इज लविंग टू आवर बॉडी आल्सो. Spiritually, eating or causing harm to the other life supports negative karmas, and these negative karmas, they are spiritually not good one. Unfortunately, our current dietary lifestyle is becoming more ritualistic. हम rituals की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और principles की तरफ कम जा रहे हैं. इसके बारे में हम आपके विचार सुनेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. Another reasons, non-vegetarian diet, इसके नुकसान क्या क्या हैं? मीट इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस. जितना प्लांट बेस्ड या एग्रीकल्चर में जो एक्सपेंसेस लगते हैं, बोथ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, मीट इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस. Unfortunately, non-veg eat protein twice than needed, whereas vegetarians have got sufficient proteins. Ecologically, environmental degradation is quite common or higher with the non-vegetarian diet. Ethically, if you look into, 70 billion animals are slaughtered every year. Are we justified in doing that one? A big question. अगर हम वेजिटेरियन डाइट को लें, जैसा कि बताया, enough proteins, health, it's a healthy diet, it provides sufficient strength and stamina. Already बता चुका हूं, heart disease, diabetes, stroke and other things, cancers, they वो कम होते हैं. Important point जो कि coming up है, it modulates gut microbiomes. We'll be talking this a little later also. हमारी इंटेस्टाइन में जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फेवरेबल ना कि नेगेटिव की तरह आते हैं, जो कि नॉन वेज में आते हैं. एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स विद द वेजिटेरियन डाइट्स, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस आर कम होते हैं. लव, हैप्पीनेस,
memory, they are better with the vegetarian diets. Thus, vegetarian diets and Jain diet is quite good to adopt. Next slide. Kuch historical facts. Vegetarians in ancient India, the people were mainly vegetarians, both in Jains and in Hindus. Lately, this population graph is changing. Last हमारा जो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्वे जो प्रोड्यूस हुआ उसमें दिखाया गया है कि अराउंड 9% ऑफ द जैन्स दे आर नॉन वेज अनफॉर्चुनेटली. इवन दिस इज नॉट, ये सिर्फ अपने जो इंडिया में ही नहीं है, यह वर्ल्ड ओवर वेजिटेरियंस आर इंक्रीजिंग, जो कि अर्लियर ग्रीक सिविलाइजेशन में ही था वेजिटेरियनिज्म. नाउ इट इज इंक्रीजिंग across the world as either a vegan movement or vegetarian movement. Second point जो है dairy products. Dairy products क्या हमें लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, यह साइंटिफिकली एक बहुत बड़ा इश्यू है. एक बच्चा जो कि माँ का दूध पीता है, वो 2 साल बाद दूध को पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज बनाना बंद कर देता है. हमारे जो दूध पीने की जो आदत थी या जो हैबिट है, ये आज से 10,000 साल पहले ही डेवलप हुई थी. इसीलिए हमारी स्टोमक ग्रेजुअली डेवलपिंग लैक्टेज, तब इसीलिए सभी लोग अभी तक लैक्टेज डेवलप नहीं कर पाए. ये ह्यूमन विल बी डेवलपिंग स्लोली एंड स्लोली. इसीलिए हम देखते हैं कि काफी लोगों को दूध सूट नहीं करता है, जबकि मदर मिल्क इज सुटेबल टू ऑल द बेबीज. नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम एनाटॉमिकली, दिस इज नाउ वन प्योर साइंटिफिक स्लाइड, कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कहता है कि हमें हर्बीवोरस मींस प्लांट ईटिंग. अवर स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर फेवर्स. अब पहले हमारे जो दांत, पीछे के दांत हैं जो मोलर बोलते हैं, दे आर लाइक ग्राइंडिंग. ये आटे की चक्की की तरह है, ये खाने को पीसते हैं. जबकि नॉन वेज एनिमल्स में canines, the front tooth are very sharp, जैसे डॉग में या शेर में जो आप देख रहे हैं, ये मसल्स को टीयर अप करने के लिए है. सेम उनके नेल्स भी, दे आर फॉर टीयरिंग द मीट एंड नॉट फॉर द ग्राइंडिंग और च्यूइंग. एंड हमारे जॉ, ये हमारे जॉ चारों तरफ मूव कर रही है, लाइक दैट वन. इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन टू च्यू द फूड. जबकि एनिमल्स में, particularly non-veg animals में, it moves up and down only, just to close, grasp, and then swallow. So they swallow the food. Human being are pre-digested, then swallow. And animals or the non-veg animals, they don't digest, they swallow it. हमारी जो small intestine है, ये भी long है, जबकि नॉन वेज एनिमल्स में शॉर्ट होती है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन ऑफ द मीट नहीं हो. तो हमारी इंटेस्टाइन है, ये भी इसको सपोर्ट कर रही है. नेक्स्ट स्लाइड. अब मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक प्रोटीन मिथ ऑफ नॉन वेज, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल प्रोटीन्स आर मेड बाय प्लांट एंड नॉट बाय द मीट. इनफैक्ट द मीट इज प्रिपेयर्ड after changing it from the plant to the amino acids, and animal converts it to the protein of the muscles. अगर हम देखें काफी large animals जैसे हाथी, rhino and gorillas, they all are pure vegetarians. Next slide. Comparison, already मैंने weight gain के बारे में बात कर दिया. And salt is much more in the non-vegetarian diet. Smoke and charred non-veg item, they are carcinogenics. Unhygienic, parasites and antibiotics, they are often there with the non-veg items. And psychologically, these people are with the poor concentration and increased anger. This non-veg has got a
एंड ये डाइट हमारे आयुर्वेदिक में रासिक ऑब्लिक तामसिक के बारे में कहा गया है, जबकि वेजिटेरियन डाइट को सात्विक लेबल दिया गया है, जो कि हमारी जैन डाइट का रूप है। इसमें फाइबर, फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स काफी होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, हमारी डाइट में मिनरल्स, पर्टिकुलरली B12, कैल्शियम, आयरन, ये कम होते हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या ये सही है या नहीं है। Unfortunately, vegetarian diet these days are plagued with the insecticides and parasites. So we have to be careful in looking into these aspects. I suppose many times people go into the organic food. Next slide. ये दिखाई गई है कि वेजिटेरियन बने तो क्या फायदा होगा। हर साल होने वाली मौतों में 6 to 10% reduction can be achieved. Greenhouse gases, जो कि हाईएस्ट विद द बीफ और गाय का दूध, और भैंस का दूध भी काफी कॉमन है ग्रीन हाउस बनाने के लिए। So greenhouse side effects. So if everyone turned vegetarian or the vegan by 2015, greenhouse gases will be reduced by 70%. ये स्टडी पब्लिश हुई है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में 2016 में। इवन हम देखें, जैसा कि मैंने कहा, वेगन 29% कार्बन एमिशन, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स approximately 57% of the carbon emissions are there with that one. Next slide. ये अब तक मैंने वेजिटेरियनिज्म के बारे में बात की है। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलता हूँ, मील टाइमिंग्स। ये कार्टून दिखाता है कि जब भी हमारे कार में या हमारी बॉडी में पेट्रोल कम हो तो उसको रिफिल किया जाए, पर क्या इनडिस्क्रिमिनेट किया जाए या जरूरत पड़ने पर ही किया जाए। 3 मील्स डे, जो कि आजकल की कॉमन हैबिट है, ये एक नया इन्वेंशन, नया प्रैक्टिस डेवलप हुई है, ना कि ओरिजिनल थी। ओरिजिनल में ब्रेकफास्ट स्मॉल, गुड लंच एंड स्मॉल डिनर, and need to top, we need to top, you know the car very well, need to top it regularly, but with the balance, means good petrol. Means it should not have too much fat or too less fat also. Next slide. यह सर्केडियन रिदम, जो कि दिन रात की बायोलॉजिकल क्लॉक है, कि हम रात को सोते हैं और दिन में जगते हैं। तो मॉर्निंग 6 o'clock और मॉर्निंग 5 o'clock से दोपहर को 2 या 3 बजे तक हमारा, जैसे कि ग्रीन दिखाया गया है, ये पीरियड है कि हमारी एक्टिविटी और हमारी अवेकनेस सबसे ज्यादा होती है। एंड द हाईएस्ट अलर्टनेस इज एट 10 o'clock. Even our reaction times, they start coming down after 3 p.m. in the evening. So these are the times. Thus we should govern our food intake with the biological clock. Science also has said कि digestion morning वक्त में ही अच्छा होता है. So we should complete our major meal before 12 noon. Next slide. Next slide. Thus we should coordinate and eat as per sun cycle or the solar cycle. मैं अपनी क्लास में काफी बच्चों को पूछता हूँ, name vegetarian animals who eat in the night. They often are not able to answer. Few answer as a deer, rhino. These are the animals who eat in the night. But I say the maximum culprit, vegetarian animals who eat in the night, is the human being. ये साइकिल हमारी जेनेरिक बिलियंस ऑफ द इयर्स में ये साइकिल बनी हुई थी, रिसेंटली इसको तोड़ा गया है। Scientifically, as I told in the last slide, minimum 3 to 4 hours are needed to digest or process the food.
Thus, we must complete the food by 6 o'clock if you have to sleep by 10 o'clock. First meal post sunrise and the last before sunset. आप कहेंगे कि मैं जैन डाइट में इसकी क्यों बात कर रहा हूं कि हमारी 24 जो प्रैक्टिस है वो यही तो है. फर्स्ट मील पोस्ट सनराइज एंड लास्ट बिफोर सनसेट. इट रिजेंबल्स जो आज मार्केट में जो कॉमन चल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग. 16-8 means 8 hours eating period, 16 hours fasting period. Another says 4 hours and the 20 hours. A few people recommend 1 meal a day. So these are many things are there and few studies are there. This is circadian rhythm controls good hormones like cortisol, insulin and thyroid. So there are lot many scientific benefits, the health benefits and the psychological benefits. Next slide. अगर ये सब अच्छी बात है तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? Our schedules are now hectic. We work late in the night, can't come home for the early comfortable dinner. In addition, I had to put that the use of artificial light, which I am just using right now in my room, blinds on the windows, they are changing my circadian rhythms a lot. Thus, I have to follow सर्केडियन रिदम. पर अगर हमें मजबूरी हो जाए कि मैं जो रात को खाना ही है तो डे टाइम में पैक्ड स्नैक्स और फ्राइड फूड ना लूं और इसके बदले में फ्रूट्स लूं, तो चांसेस हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉट ईटिंग एज पर सोलर साइकिल विल बी लेस. नेक्स्ट स्लाइड. अदर डाइटरी प्रैक्टिसेस. डाइट की क्वांटिटी कम करना. कैलोरी और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस रिड्यूस बाय 20 to 40%. इसके लिए जैन में पर्टिकुलरली रस परित्याग, जो कि not only spiritual but has got a health benefit also. Giving up favorite food. Ayam bhel is one of the things which is toughest thing to achieve in the rasa parityag. And limiting the number of food items is again point to the caloric or the dietary restrictions. Thus, जो आजकल ये कॉमन हमें कहा गया है हेल्थ बुलेटिन्स, हेल्थ मैगजीन्स कि reduce your diet intake, it is already inbuilt in the Jain dietary practices. Avoid indiscriminate eating. Scientifically, it is known that it increases insulin and glucagon, obesity and other diseases. सिर्फ डाइट रेस्ट्रिक्शंस और डाइट को नंबर का कम नहीं किया गया है, इवन प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड के प्रिंसिपल्स भी जैन डाइटरी प्रैक्टिसेस में रखे गए हैं कि ये सब नाइट में ना तो खाना बनाया जाए ना स्टोर किया जाए, क्योंकि जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं वो काफी प्रोलिफरेट होते हैं इन द डार्क टाइम. सो द प्रिपरेशन एंड स्टोरेज फूड should be avoided at the night. And even filtered water, I'll be talking in the next slide and not just now. Next. The benefit of diet restrictions, already talked things, but it increases the learning and cognitive decline. Scientifically, हमने देखा है कि body becomes more parasympathetic, means शांत स्वभाव के, rather than हड़बड़ी sympathetic स्वभाव के. और इवन जो एपिजेनेटिक स्टडीज में जो दिखाया गया है, टीलोमियर, ये जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो होते हैं जो कि हमारी एज और लॉन्गिविटी को डिसाइड करते हैं, उनमें उनकी या तो लेंथ बढ़ती है या उनके ब्रेक डाउन कम होते हैं. तो डाइट रेस्ट्रिक्शन से काफी बेनिफिट है. हम आगे देखेंगे कि इवन नोबेल प्राइज भी इसी बारे में दिया गया है. नेक्स्ट स्लाइड. कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस के और भी फायदे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है. ये अभी इस बार जो कोरोना जो कोविड एपिडेमिक था, पेंडेमिक, इसमें इसका काफी यूज रहा है और अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट और एडॉप्टिंग इट. कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस, इट गिव्स व्हेन यू डू द कैलोरी, मतलब आप कम खाते हैं
तो आपके डाइजेशन और इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और ऑटोफेजी जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, ये इसका ऑटोफेजी इज एक्टिवेटेड। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड मैं आपको स्पेशल देना चाहता हूं, गट बायोम एंड इम्यूनिटी। वैसे तो कहा गया कि मैं एक सोल हूं, बट माय बॉडी is with the trillions of the other souls associated with me. At the number are estimated to be 10 raised to 13 to 10 raised to 14. And majority of them are in its intestine, mouth, rectum. Few are in the genitalia and other organs of the body. So हमें, और ये सब हमारे मित्र हैं, ये हमारे शत्रु नहीं है। अगर हम अच्छी डाइट लें, प्रॉपर डाइट लें और डाइटरी हैबिट्स लें, तो ये हमें रिमार्केबल चीज, चाहे वो स्लीप हो, हेल्थ हो, इम्यूनिटी हो, सब में ये अगर हम देखें तो ये माइक्रोबायोम ये फैटी एसिड्स को रिड्यूस करते हैं, तोड़ते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। दो वर्ड पर्टिकुलरली जो आजकल मार्केट में है, प्रोबायोटिक फूड एंड द प्रीबायोटिक फूड। Yogurt, soft cheese, milk, and other types. And prebiotics like garlic, onion, bananas, asparagus, oatmeals, red wine, honey. Unfortunately, some of them are prohibited in the Jain diets. We have to make a good research to find out whether they are good bacteria or they are bad bacteria to be avoided. If they are bad, definitely they are to be avoided. But if they are good, we need to look into our principles of the Jain diet once more. Next slide. Next time. Drinking water, which I said in the last time. Unfiltered water or unhygienic water is not to be taken. हम आज जो बिस्लरी हमारी काफी टेबल्स पर पड़ी है, ये उसी का ही बिजनेस रूप है। ये हमें जैन डाइटरी प्रैक्टिसेस में कहा गया है कि अनफिल्टर्ड वाटर एंड अनहाइजीनिक वाटर को नहीं लेना है। पहले की जब बावलीज और जब कुएं होते थे तो पानी को छाना जाता था, और बिछावनी और जीवानी वाज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस, आई विल नॉट बी टॉकिंग। पर आज की जो पाइप वाटर सप्लाई है, उसे देखते हुए हमें क्या ये प्रैक्टिस अभी रहनी चाहिए? पर हैबिचुअली most of the Jain families still filter the water through a thick muslin cloth. Next slide. मैं सिर्फ दो नोबेल लॉरेट्स को कोट करना चाहूंगा, जिनको कि जैन डाइटरी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड मिला है। ये जापानी साइंटिस्ट हैं। 2016 में इनको ऑटोफेजी, जो कि मैंने अभी कहा था कि जब बॉडी फास्ट करती है, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो बॉडी डाइजेस्ट इट्स ओन, जो मैंने बताया था ट्रिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया, इट डाइजेस्ट दोस, इट डाइजेस्ट मेरी जो बॉडी के जो मरे हुए सेल्स है उनको खाता है, और उसी से हमारी बॉडी का फ्यूल चलता है। एंड इसका मेन एम है कि क्लींस द बॉडी फ्रॉम ओल्ड एंड कैंसरस सेल्स एंड द टॉक्सिन्स। सो ऑटोफेजी वाज वन ऑफ द थिंग which was talked to in our religion, and Nobel Prize was won by this gentleman in the 2016. Next. Another Nobel laureate, 2017, Jeffrey Hall and others. इन्होंने निकाला था, फिजियोलॉजी में मिला था इनको, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग सर्केडियन रिदम, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले काफी बात की थी। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक, it helps us to anticipate and adapt to the regular rhythm of the day. हमारी चौवियार और intermittent fasting is a product of this one, but it was recognized in the world literature a few years back only. So I said चौवियार 48 hours minutes before sunset and not eating food till
48 minutes after sunrise. Next slide. मैं अभी थर्ड पोर्शन के लिए जा रहा हूं, फास्टिंग. ये जैन डाइटरी प्रैक्टिसेस की वन ऑफ द रिमार्केबल अचीवमेंट और थिंग्स हैं. फास्टिंग या तो कंटिन्यूस या इंटरमिटेंट. ये इंटरमिटेंट वो नहीं है जो मैं पहले बात कर रहा था, ये दूसरी तरह के इंटरमिटेंट. कंटिन्यूस मीन्स continuous fast for more than 24 hours. In fact, Jains mein it is more than 36 hours, 2 nights and the 1 day. So the minimum fast for the Jainism is a continuous for the 36 hours. Whereas intermittent fasting, which was earlier labeled alternate day or 2 consecutive days, modified weekly fast, 2 days fasting, 5 days eating, 1 day fasting, 6 days eating. I already talked on the time restricted fasting and caloric restrictions. So basically fasting is nothing but eating window to be shortened and the fasting window should be lengthened. That is the basic of the entire concept of the fasting, which is equivalent to the caloric restrictions. Next slide. अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो हमारे सभी तीर्थंकर्स ने जो salvation या जो अचीव किया था केवल ज्ञान, that was with the fasting only. पर ये सिर्फ जैनिज्म में ही नहीं है. क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम and almost all religions they favor fasting. Even in medicine, it is one of the oldest therapy propagated by the Hippocrates. पर इसकी साइंटिफिक स्टडीज, फिजिकल बेनिफिट्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए थे 1900 के बिगनिंग में, और 1935 में मैक्के एट ऑल डेवलप्ड द साइंस ऑफ कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस, फॉर विच वी आर नाउ एक्सपेंडिंग इट अगेन एंड अगेन. अनफॉर्चुनेटली हमारी फास्टिंग प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर रमजान फास्टिंग जो कि मुस्लिम्स में काफी कॉमन है, काफी होती है, मैक्सिमम रिसर्च इस पे है. पर ये देखें तो कंटिन्यूस फास्ट नहीं है. ये फास्ट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली फॉर डे टाइम. So daytime not eating is the Ramadan fasting, but the maximum research and maximum benefits are being shown by this one scientifically. Perhaps we need to take a clue from this one. Next slide. Next slide. So the purpose, spiritual benefits are the lot than the health benefits. Tap, penas, shedding karma, increased mental clarity, abstain from the pleasure with the five senses. Socially, when many people, like in the Payushan, people do the mass upvas, it is a social, bringing the community together. And last point, it is empathy for the people who are not with the basic needs. Thus, when you do the fasting, you have develop empathy to that one. Next slide. These are the physiological aspect. The person loses a weight. Even a thin person can survive for more than 40 days without food. Hunger, which is there with the fasting, is more of a psychological hunger than the physiological hunger. Next slide. I'm just running a fast now. Carbohydrate metabolism. Serum insulin initially increases and the glucose goes down. Later on, it stabilizes. And all the lipid fractals, they come down with the good cholesterol, like high density lipoprotein cholesterol, it goes up. Next slide. Next slide. So these are the benefits: spiritual, higher consciousness, positive health, mental health, with the reduction in the anxiety and depression. And parasympathetic goes up, sympathetic comes down. With the caloric restrictions, these all points I have already told. So they are similar to physical benefits, are similar to that one with the caloric restrictions. Next slide.
जैन विश्व भारती के BMIRC के अंडर में हमने एक ग्रांट प्रोजेक्ट लिया था, where we have studied the fasting, और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी की थी 98 पीपल पर, जिसमें 23 people did fasting for more than 8 days, what is known as 28 और 10 लक्षण। हमने उनके हाइट, वेट, BMI, बॉडी फैट, पल्स, BP, शुगर, क्रिएटिनिन एंड ऑल अदर इंक्लूडिंग कॉर्टिसोल देखा। हमने जो पाया कि वेट और BMI 10 दिन तक रिड्यूस होती है, बाद में स्टेबल हो जाती है, PP में स्लाइड चेंज होता है, पल्स और में कोई जनरल चेंज नहीं होता है, लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव होता है एंड कॉर्टिसोल बढ़ता है, शुगर में कोई मेजर चेंज नहीं आता 10 दिन के बाद में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो यही एक स्टडी है जो जैन फास्टिंग में अभी तक वर्ल्ड में हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ये कुछ को और भी किया जाए और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो फास्टिंग के, उनको भी स्टडी किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये पेपर हमने पब्लिश किया था उसी स्टडी का 2020 में। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फास्ट शुड बी डन विद a healthy person at live, जब भी उनकी इच्छा हो किया जाए, पर चिल्ड्रन एंड टू ओल्ड, रिफाइंड डाइट पे जो लोग हों या लेबरर हों उनको नहीं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर एंड पीपल हु आर विद द डिजीज। नेक्स्ट स्लाइड। Coming to the last portion of my talk, what should we be eating? अगर इतना restrictions हैं, इतनी cautions हैं, overall diet pattern is very, very important. That is one of the major point. And we must increase vegetables, fruits, legumes, whole grains, nuts, seeds, and food which are rich in the omega-3. अगर आप देखेंगे तो यही है जो कि जैनिज्म में भी बताई गई है और ये आजकल मार्केट में भी यही चल रहा है। एंड डिक्रीज इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड। अगर हम लें अक्रॉस द वर्ल्ड दो डाइट जो इस पे खरी उतरती है, जैन डाइट और मेडिटेरियन डाइट, जो कि यूरोप में काफी पॉपुलर है। मेरी सरमन, बाई फ्रॉम ग्रीन ग्रोसर और स्टोर्स rather than from the chemist. So don't ask for the supplement, the vitamin supplement, food supplement. No, buy from the green grocer or the stores. Next slide. These are the research potential. हमें जैन डाइट को एज ए मॉडल बनाना है टोटल हेल्थ के लिए। ये हमारी इच्छा रहनी चाहिए। हमें स्टडी करना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस, anatomical, biological, hormonal, epigenetic, so many changes we can study with the dietary habits and what are their beneficial effect on the health, mental health, physical fitness and disease. एक important है कि long term dietary sequels क्या है, whether हमारी age और हमारी morbidity means disease pattern क्या ये improve होते हैं जैन डाइट से। We have to see and research and tell the whole world that no, Jain diet is definitely better. Next slide. To conclude, it's a diet is a pious process. मतलब हमारा फूड एक बहुत पवित्र है, हमें नॉन वायलेंस में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। Scientifically, Jain diet enhances physical, mental and spiritual health with lot of economical, ecological and environmental benefits. जैसा कि काफी बताया गया है, we must eat to synchronize with the circadian rhythm or the solar cycle. सेकंड ये है कि यह कुछ दिनों की बात नहीं होनी चाहिए, ये एक लाइफस्टाइल पैटर्न है जो कि कुछ दिनों में करने से वापस हम रिवर्ट हो जाते हैं, तो ये गलत बात होगी। And it should be propagated as a mass movement, then rather than going into the rituals. Not saying that I am vegetarian, I am that one. Because हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वेजिटेरियन डाइट के साथ में कि हम एक्सरसाइज को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। And the sermon is exercise is the king and diet is the queen. So if you got both of them, you got the whole kingdom with you.
vegetarians unfortunately has got a higher incidence of obesity and metabolism. This is because of dairy products, physical inactivity. That is the main reason. And another point which we need to research in a big way is the B12 deficiency, which is quite common in the vegan and vegetarians. With these, I thank you very much for the patience listening. And now I'll be looking into the interaction with you and learn where I'm deficit or you are able to convince me more. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. It was a amazing comparative study that आपने करवाया Jain diet के बारे में and with the scientific values. But before I conclude with my few lines, I would like to open this platform and अगर किसी दर्शकों को कोई प्रश्न है, प्लीज आप हैंड रेज करिए. हम 1 या 2 मिनट समय देंगे प्रश्न के लिए. जिन्होंने हैंड रेज किया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए. हाँ, ये प्रीबायोटिक और जो आपने बताया वो क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? Prebiotic and the probiotics, they are microorganisms. जैसे दही है, ये प्रोबायोटिक है. मतलब जो हम जानते हैं कि दही में जीवाणु होते हैं, पर ये हेल्दी जीवाणु होते हैं. तो इसीलिए मतलब इनको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स which supports the development of microorganisms. So these are the two important issues. And unfortunately, हमें Jain diet में जो है garlics and other things, they are not permitted. So should we go for that one or should we revise our sermons with that one? That is a point for research. But probiotic and prebiotics, they are catching up the market in a big way. People are spending billions and billions on that one, and which are there in our diet only. I think. Yes, sir. Thank you so much. Dr. Millie Singhvi जी, आप अपना प्रश्न पूछिए. सर, अगर बॉडी में सोडियम का लेवल अगर कम रहने की टेंडेंसी है तो उसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं? देखिएगा, 2 तरीके हैं. एक तो आपने कहा कि बॉडी में सोडियम कम है. एक तो आप कोई ऐसी कोई दवाई नहीं ले रहे हैं जिससे सोडियम कम हो. एग्जाम्पल डायूरेटिक्स जो कि हार्ट के लिए लेते हैं या ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं, उनको आप अवॉइड करिए. और सेकंड, ये सॉल्ट रेस्ट्रिक्शंस को कम करिए. जो हम लोगों के मेडिकल में हम जानते हैं, कम सॉल्ट से ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा सॉल्ट से कम नुकसान होता है. तो आपको, और इससे फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो देयर आर मेडिसिन्स which I will not be able to tell you on the. Okay. जी, thank you so much. मंजू जी, आप अपना प्रश्न पूछिए. Jai Jinendra sir, what is the role of caffeine and how to avoid it, or is there any other substitute for that? Caffeine you are asking for, na? Yes, sir. Yeah. Now the caffeine is a stimulant, like a tea and other any. It is not needed. First, it is not needed in the body. It is a artificial additive to our diet, so it is not needed. And to stop it is your willpower only. You cannot say have any other reason to that one. The third thing is that the caffeine, even if you have to consume, use it as less as possible. Boil the liquor as less as possible. You will be having a less problem than storing it and boiling it for a long time. Okay. Thank you so much, sir. Because it more than a stimulant, it gives an instant energy. No, and, drives. No, I disagree with you. Caffeine doesn't give any energy. It doesn't have got any energy value. It has got a stimulant value. And because of that, you feel energetic. But you don't get any energy because of that. Thank you so much, sir. But I'm sure. Okay, thank you, sir. Yes, आपके answer से lot of us have felt sad about it because we are so addict of taking caffeine. So next question I'll take Manju Chopra ji. आप please question पूछिए. जय जिनेंद्र.
जी, जय go ahead जिनेंद्र। now. हाँ, मुझे आपने ये 3 डाइट के बारे में बताया है ना? हेलो, जी हाँ, जी हाँ, मैम, बताइए। सुन हाँ, रहे हैं, आवाज आ रही है। हाँ, आपने 3 डाइट के बारे में बताया, तो ठीक है। अब हम लोग सभी लोग आजकल 3 डाइट लेते हैं, नाश्ता, सुबह का खाना, बल्कि 4 डाइट लेने लग गए हैं Yeah, अगर quite. ऐसे देखा। हाँ, और कई लोग तो रात को भी लेते हैं, तो 5 डाइट हो गए। तो क्या आप इसको थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, देखिएगा, the 2 important things. One is the total food you are consuming in the 24 hours. Ideal recommendation is to divide into the 2 or 3. And out of that, the lunch or the afternoon around 12 o'clock should be the heaviest. Breakfast is the moderate and dinner is the very light. अगर इसको कहा जाए, do the breakfast like a king, lunch like a queen, and dinner like a laborer. That is the one quotation which is quite famous in the market or in the literature. It is quite common. But if you look into that one, the total calorie is much more important. Second, even if you are not able to digest it, you can break it in the 2 or more than 2, but see that you don't cross the limit. That is the main thing. Okay. टोटल कैलोरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो आप कह रहे हैं सर कि हम इसको 5 के में अगर डिवाइड करके खा रहे हैं? No, it's not recommended. Not recommended. It is not recommended. Is that 2 or 3? You can have a small bit, small snacks, but cannot have a major meal. Okay, got it. 5 times major meal are not recommended. You can break it with the small snacks. जी, thank you. And especially and not with the pre-packed food. Have with the fruits. That is the main thing. हाँ, नहीं तो इसका मतलब है कि अगर आपको बीच में भूख लग जाती है तो आप फल खाएं या सब्जियां खाएं। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मंजू मैम. या पलक शाह जी, प्रश्न लीजिए. हाँ, yeah, thank you. This has been really helpful. Just my question is, there are some criteria about the food selection that we cannot have, milk with fruits. And so if we are dividing our overall daytime food in 2 or 3 meals, how should we, distribute, like in the morning fruits and not milk together, or there should not be, multiple fruits together or things like that? Yeah, because this is basically not from the allopathy, but from the Ayurvedic and from the practices, the nutritional practices. The combination of the certain items are not recommended. That's why I said we must develop a model so that we can pass on to the people like you and to the younger generation. That yes, this is the one dietary, because we should not go with the older one. In fact, when I was the small kid, even taking the green vegetables was not recommended in our community. Suka khao. That was quite common in our community at that time. So we have to come out with the revised schedule, which takes up into all the good things, particularly the nutritions, vitamins, and all things are taken into account. And microbiome, I'm really worried about that one. B12 I'm also worried. So we should come out with a healthy formula or a accepted formula, which can be practical for all generations to come. थैंक यू सो मच सर. सुलेख जैन जी, आप प्रश्न पूछिए. थैंक यू सो मच पलक. Can you hear now? Sir, I am Jain. I am 78 years old. I am taking my dinner before sunset, and still after that I got a disease like cancer also. I am pure vegetarian. So what should I avoid? What is not to be taken in vegetarian, and what is to be taken so that the further I remain in healthy? You are already in a good dietary. You are what I assume you are already in a good dietary schedule. So I don't think you need to
have a big change in the dietary, and particularly if you are not taking any additives. The additives are the carcinogenics and not the food items. But in none of the green vegetables or the greens, they are carcinogenics. But meat and other products, they are definitely carcinogenics. And additives, I'm more worried about the additives. If you are taking the preserved food, look into that one. Okay. Your second question is this, sir. The प्रसन्न सागर महाराज जो है वो 557 दिन का उन्होंने फास्ट किया है. एक दिन लेते हैं, 4 दिन नहीं लेते, एक दिन लेते हैं, 8 दिन लेते. You must have been knowing him. So how is managing all these things? These are the anecdotal reports. We have got few explanations. One is the autophagy. I talked about the autophagy, that they live on their own body. That is the one. Just let me complete. Second thing is, some people, they survive on the solar energy. Like the plants get the solar energy, convert it into the chlorophyll and the proteins, and then, so these are the two likely explanation. I'm not saying that they are the full explanation. Sir. True. Thank you so much, Suresh sir. Thank you. Thank you so much. Last question रहेगा प्रवीणा जी का. आप क्वेश्चन पूछिए. सर, आप कह रहे हैं कि वेजिटेबल ग्रीन इसमें इसके अंदर ग्रीन लीफी में B12 नहीं है, तो B12 तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. फिर हम लोग कहाँ से प्राप्त करें उसे? देखिएगा कि B12 is one of the important. That's what I said. I'm more worried about the B12 again and again. The second thing, nearest I can go, Ankurit, because that is the only life I think permitted in the Jainism. Ankurit, though many sadhus and the other religious teachers, they don't recommend Ankurit. But Ankurit is the only one. Plus some fruits like Singada, green vegetables, milk and the dairy products, they have got a good amount of B12, but not very good amount. Okay, इसी के साथ मैं यहाँ पे भी प्रश्न, समय हो चुका है तो मैं प्रश्न और नहीं ले पाऊंगी. So it was a really wonderful session, sir. Thank you so much once again. आपने जो जैन डाइट, जैसे मैंने पॉइंट्स जो नोट करे उसमें आपने इतने साइंटिफिक वैल्यूज के साथ साथ आपने शुरुआत करी कि जो साइंटिफिक बेसिस जो डाइट के होते हैं वो ही क्या होते हैं उसको आपने समझाया. फिर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल के अंतर्गत डाइट, उसके प्रकार और उसके बेनिफिट्स, हर तरह के डाइट उनके प्रकार और बेनिफिट को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच यू डेल्ट टुडे वाज फास्टिंग, बिकॉज ये हम सबसे कम बोलते बहुत हैं, बट इस पे हम बहुत कम चर्चा करते हैं, उसके गुणों को बहुत ही कम जानते हैं. तो ये फास्टिंग का सिद्धांत इतना हितकारी हो सकता है, ये बहुत ही अच्छे से उभर के आया आज के इस सेशन में. और अगर देखें तो बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अगर पाना है तो डेफिनेटली हमें, जैसा कि आपने बताया, स्वाद पे अपनी डिपेंडेंसी है उसको कम करना होगा और बहुत जागरूक होकर अपने हेल्थ एंड लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, लाइक अ लाइफ प्रोजेक्ट बनाना होगा, जो कि आपने मैसेज दिया हमें. और जैसे आपने बताया कि जैन धर्म में खान पान हम सब जानते हैं बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. बट कंपेयर टू एनी अदर प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग अक्रॉस ऑल कल्चर, जो मेंटल, स्पिरिचुअल और जो इमोशनल बेनिफिट्स होते हैं वो हमें जैन डाइटरी प्रिंसिपल्स को पाके इमीडिएटली मिलते हैं. एंड आपने अंत में उसको बताया भी, पॉजिटिव एटीट्यूड, लॉन्जेविटी, एक अच्छे अपने आप से स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की क्षमता. So it was amazing. There's so much to take from your this thing. So I'm so happy for such a great beginning of Jain Talks in this new year. Thank you so much once again for coming to our platform. And अब इसकी आपकी अनुमति के साथ, चूंकि समय हो चला है, मैं इस आज के सेशन को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी सर. सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद. जी. सो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं इस सेशन को विराम दूंगी. अनु परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवे, सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सव भुवेसु, वेरन मंजणा कीर्णई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना को याचरु,
राग द्वेष थी मुक्त थईने समता सहु समाचरो। इसी संदेश के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट जैन टॉक्स के सेशन में। सी यू। जय जिनेंद्र।